Hello everyone, I'm Parul and you're watching Econ in Flat. So in the previous video, I started with human capital formation from Indian economic development and I'm continuing with that topic. Earlier I discussed topic 4.1 and topic 4.2. In this video, I'll be talking about topic 4.3. This particular topic will talk about the sources of human capital formation कि क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इकोनॉमी. इफ़ यू सी NCERT टॉपिक 4.3 यहाँ से सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है. ये पूरा का पूरा टॉपिक पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 पर है. सबसे पहले एजुकेशन से स्टार्ट है, उसके बाद इट इज़ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन. उसके बाद पेज 62 पे एक बॉक्स दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और ये लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है जो उसी टॉपिक 4.3 का पार्ट है. Now there are 5 important sources. Number 1 is investment in education. Number 2 is investment in health. Number 3 is investment in training the employees, on the job training. The third is investment in migration. People do investment in migration नहीं बोलूँगी मैं. Basically people migrate to different areas in search of better job opportunities. And last one is investment in providing information to the people. जैसे schools में भी बच्चों के career counseling sessions होते हैं. They are guided कि क्या क्या job prospects या क्या क्या career prospects हो सकते हैं उनके after class 12th. Likewise, the labor is also should be rather provided information about in what all areas they can go, या फिर उनके skills oriented jobs किस किस sectors में हो सकते हैं, या उनको कितना salary structure मिल सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में जाने से. सो प्रोवाइडिंग नॉट जस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, बट उनको इन्फॉर्म करना अबाउट द अवेलेबिलिटी, अबाउट द एग्जिस्टिंग जॉब मार्केट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू विल get this answer for question number 6. What factors contribute to human capital formation, जिसमें आप सारे sources explain करोगे. अब पेपर में एक इंडिविजुअल सोर्स भी आ सकता है फॉर अ 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन, या 2 सोर्स पूछ लेंगे, या फिर ये पूरा कंबाइन एक 6 मार्कर क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Now I will continue to explain the sources with this beautiful quote. One machine can do the work of 50 ordinary men and no machine can do the work of one extraordinary man. So this is what the idea of human capital formation is, to convert a simple resource into a useful asset for the nation, for the economic development of the country. Also specifically human capital formation में हम सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स की बात नहीं करते कि एक इंडिविजुअल को तो फायदा होगा ही होगा, बट ऑल्सो इट बेनिफिट्स द सोसाइटी एट लार्ज. खुद को भी बेनिफिट होगा, प्लस दे ऑल्सो बेनिफिट पीपल अराउंड देम. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सोर्स, which is the investment in education. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो मैंने है शुरू के इंट्रोडक्शन में एजुकेशन के ऊपर, ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है येलो हाईलाइटेड पोर्शन, ये कुछ एक कीवर्ड्स दिए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं. तो आई हैव यूज दीज पर्टिकुलर कीवर्ड्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर सोर्स. One, education leads to higher earning capacity, better social standing and pride, to make better choices in life, understand the changes taking place in society, stimulates innovation, it leads to adaptation of new technologies, like even I have also adapted to using technologies and making YouTube videos. I have shifted from a simple classroom teaching say to teaching for the masses. So this is actually one of my learning where I have adapted to using new technology. Accelerates the development process. Along with that, जब आप
इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक 4.3, उसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक चीज याद रखना, ह्यूमन कैपिटल का जो बेसिक मोटिव है वो यही है टू मेक पीपल capable of earning good revenues या good earning expanding their earning capacity in near future by training them, by providing them better health and better education facilities. अगर हम जो भी ट्रेनिंग या जो भी एजुकेशन दे रहे हैं और वो फ्यूचर में मटीरियलाइज नहीं होती इन टर्म्स ऑफ गुड अर्निंग कैपेसिटी या गुड रेवेन्यूज फॉर देम, तो वो सिंपली सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट तक ही रुक जाएगा. इट विल नॉट प्रोसीड फर्दर टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. बट ह्यूमन कैपिटल में वी ऑलवेज रादर टॉक ऑफ converting people into labor by providing them better education, better health, and which will fetch them good revenues या अच्छी उनकी income generating capacity create कर देगा. Likewise, individuals invest in education with the objective of increasing their future income. The second important source is the investment in health. Now investment in health यहाँ पे 3 फॉर्म्स में दिया हुआ है. 1, इन्वेस्टमेंट ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन विच इज ऑन वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजीज और इलनेस. Second is the curative medicine in terms of medical intervention during illness, providing them better care, better medical facilities, better medicines, better healthcare hospitals or healthcare centers around them. Third is the social medicine, which is the spread of health literacy and provision of clean drinking water and good sanitation are the various forms of health expenditure. Even COVID में भी ऐसा हुआ था. गवर्नमेंट ने जो है, आपने if you have observed कि दिन में काफी बार जो अनाउंसमेंट्स होते थे एरियाज में टू अवेयर पीपल अबाउट द एग्जिस्टिंग पेंडेमिक एंड हाउ वन कैन प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज्ड टू सच पेंडेमिक्स. एंड ऑल्सो फोन्स पर भी कॉल्स थे कि हम कैसे बच सकते हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल मेडिसिन. सो हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली increases the supply of healthy labor force. अगर एक बंदा सिर्फ educated है and he is not capable of doing work because of their health issues, then we cannot have a human capital formation. Therefore, better health facilities along with education is a must. Third one is the investment in on-the-job training, which is also the answer to question 15 NCERT. Firm spends on the job training of their workers in 2 forms. 1, the workers may be trained in the firm itself under the supervision of a skilled worker, and the other is that the workers may be sent for off campus training. लेकिन दोनों ही केस में जो है firm will have to spend. And why do firms incur such expenditures? Because they insist that the workers should work for a specific period of time after their on-the-job training, and during which it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training. And generally the returns of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost that the firm incurs. The another one is the migration. Generally we see that people from rural areas migrate to urban areas in search of better job opportunities, but also technically qualified people like engineers, doctors do migrate to other countries because of higher salaries that they get in such countries. Migration in both these cases involves cost of transportation, definitely higher cost of living in the migrated places, and psychic cost of living in a strange socio-cultural setup, because when you go to a new place, आपको वहाँ के कल्चर से, आपको वहाँ के रूटीन से, आपको वहाँ के एनवायरनमेंट से, वेदर से, लोगों से अडेप्ट करना पड़ता है. सो इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट मॉनेटरी कॉस्ट बट ऑल्सो साइकिक कॉस्ट.
जिसे हम रियल कॉस्ट भी बोलते हैं. The enhanced earnings in the new place outweigh the cost of migration and hence expenditure on the migration is an important source. और यही reason है because their increased earnings are more than what they have to suffer. People do tend to look for better job opportunities in other countries and even in other states of the same country. The last one is the information, which is also the answer to question number 10 in NCERT. People spend to acquire information relating to the labor markets and other markets like education and health. For example, people want to know the level of salaries associated with their jobs. They also want to know whether the educational institutions provides the right type of employable skills and at what cost. This information is necessary to make decisions regarding investments in human capital as well as efficient utilization of the acquired human capital stock. Or also because आजकल people have started spending on career counseling sessions because they want to look for the right job as per their skills, and that could fetch them a good earnings in the near future. So people have actually started becoming aware. So this was all about topic 4.3. I hope you have liked my video, and please do subscribe to my channel. Also, you can visit the community section where I keep on posting a lot of multiple choice questions, which not only helps you for your board exams but also for your CUET preparations. And also you can visit my Instagram page, which you can see in the information section on the YouTube page, where I do keep posting information, updates, related questions for you to practice and to keep you motivated for your exams. Thank you so much everyone for watching.